last time we were so this is our template and we were trying to figure out what the reviewer is looking at in different sections. So we have talked about abstract, that we need to present our best result over here and give an indication that it is really novel. And then comes the introduction, and in introduction our aim is to motivate the reviewer that what we have done, why is it important, not how we have done it. So generally since we have been working on the problem, we are like interested in telling कि हमने कौन सी जो है ना किस तरह मुश्किल थी, हमें क्या हमने सॉल्व किया. तो right now it's not the time. So again we need to show that we are really novel. So we have seen some figures के, right, your introductory figure should have the comparison, जहाँ पता चल जाए आपने यहाँ कुछ किया हुआ. And then you might also be worried about using very difficult terms to impress the reviewer. Maybe it is not required. You can create a simple example indicating that what you have done is working. It also helps you. So the introduction is about this keeping the reviewer or the reader in mind, helping the reader to really understand what you have done, and then it will help the reviewer to really appreciate what you have actually done. So this is introduction, and then you have to conclude your contribution somewhere in the introduction, that okay, now this one thing is what I have done new, or these are the two things which I have done new. If you have done more, maybe you can write it down, but you have to be careful because ये जो आप बता रहे हैं, every point should have an evidence over here. यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे कहा वहाँ यहाँ पे evidence है, और अगर if you have strong evidence for 2 points and you have a very weak evidence for the third one, so you can omit that one. You can still present that result, but you can avoid claiming it upfront. So then comes the related work section, and this is the section which will decide the fate of the paper. Um, you have to prove that what you have done is state of the art. So all those recent papers which are related to your work should be here. This is the first thing which any reviewer looks at. I am working in an area and I receive a paper that is very close to that area, so I'll be aware of all the new things happening. And if I read the related work section और उसमें वो है ही नहीं, तो I have lost interest in this paper because I know कि अच्छा इन्होंने कुछ किया है, but they are not themselves up to date. They don't know what is the latest. So we have this challenge, then we have the challenge that जब हमने काम शुरू किया था तो स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ और था और अब स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ और है. So we have seen that you have to like keep on updating yourself along the way कि what is happening. अच्छा, और फिर ये हमारे लिए चैलेंज है कि we have to like point out the limitations of the previous work, so we have to be very careful in using words. हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे करते हैं आप.
कि आप कहते हैं कि they solved this very important problem. Then someone extended this to solve another problem, and then somebody improved it further. So you keep on pointing out that what is the limitation. So you divide it into different paragraphs and keep on at the end of every paragraph you keep on letting the reader know that how you are different. For example, we talked about designing filters. तो पहले आप कहेंगे कि क्लासिक फिल्टर डिजाइनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव यूज्ड दिस अप्रोच टू डिजाइन माय फिल्टर व्हिच इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज अप्रोचेस. तो वी सॉ एग्जांपल्स लास्ट टाइम कि कैसे ये करना होता है. फॉर एग्जांपल ये पेपर था, वी वर लुकिंग एट इट. तो अगर आप अगेन results up front with a detailed caption. उसके बाद then you summarize what you have done here, and then comes the related work. और इन्होंने ना they have written few sentences, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कैसे ये कह रहे हैं कि अच्छा इसने कुछ किया और फिर उसने उसको बेहतर किया और फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ. तो इस तरह you have to like make sure, convince the reviewer that you know what is the state of the art. So when you are doing it for the first time, it is slightly difficult, but once you are working with the problem, these things you already know. You already discuss it with your supervisor or you discuss it with the people who work with you that अच्छा उसने ये किया था तो मैं ये बेहतर कर रहा हूँ. तो ये this story is already in your head that how what is the weakness. So you need to just keep on reading and connecting the dots. कि अच्छा इसने क्या किया, इसने क्या किया. You don't need to explain those papers. Just by reading the abstract of any new paper, you figure out कि उन्होंने नया क्या किया. So then there is this suggestion that if you are working on something fundamental, you might dig deep and find out very old reference. So people who are actually very senior researchers, they have it in their mind. So this is where your advisor can help you. That he can tell you the history of the problem, and where you can become an important, valuable member of a research team is keeping yourself update every day. For example, a supervisor is working on 5-6 problems, and it's not possible that on every problem he keeps on updating himself every day. He keeps, the supervisor keeps getting updated anyhow. Uh, for example, you get to review a paper. So then you get updated that, okay, this is what is happening in this area, or you attend some conference. So there you have it in mind, okay, this was the best paper in that conference, so I remember something you had. So history is very clear for the supervisor. And if you really want to get your work published, this is where you can help your supervisor. Just keep on. For example, this is a paper you are building on. Go to Google Scholar, check which papers have cited this paper and which are actually related to your work. And you don't need to read every paper. For example, हमने उस टाइम भी इसी दफा भी बात की थी कि देखिए उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेस हैज बीन मेड. अब सिंपल सेंटेंस लिख के जो सारे ये 5-6 पेपर इन्होंने रेफर कर दिए. मे बी दीज आर द लेटेस्ट पेपर्स. So if there is a reviewer and he goes and looks at the references, तो यहाँ पे वो references देख रहा है कि अच्छा 97 है, 2015 है, 16 भी है, 17 भी है, तो 19 भी है. तो slowly he is getting the idea that maybe they know what they are talking about. So you don't need to memorize every related work. So
So you need to be polite, you need to be extensive, you need to be updated, and here is where you will like really the reviewer. This is the section which is the difficult section, and then comes the, this. So we saw how these people were helping. For example, ये हम पेपर लास्ट में देख रहे थे. आप लोगों से भी इसी तरह की कोई चीज एक्सपेक्टेड है कि once you read a lot of papers, try to connect the dots कि अच्छा what was the challenge and how somebody solved it, and then what was the next important contribution. So you can crawl back 3-4 years and read like 20-25 papers, so you will get the idea okay, what was going on and how this problem has matured and what is the current open issue. So here they have like really simplified like how many papers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 latest papers they have like compared with there. So this is one way of summarizing related work. And then here is another paper which is recent one. Here they have done it differently. They have categorized papers into different categories, mentioned those papers and talked about their qualities. This is again, you write it in text, but this is how you summarize. For example, जहाँ पे इन्होंने आवर्स लिखा है वहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि अच्छा ये पेपर हमारे से रिलेटेड है लेकिन इसमें कोई एक्यूरेसी उनकी कम है और हमारी ज़्यादा है. तो यू द रीडर इज क्लियर कि अच्छा आप ये क्लेम ये कर रहे हैं, इन्होंने कह दिया है कि ये सारे पेपर इनको पता है, सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स उन्होंने लिख दिए, डिफरेंशिएट कर लिया और जो ये क्लेम कर रहे हैं देयर एक्यूरेसी इज हाई. So now I just need to go and check their results. If their accuracy is high, then yes, they have done. There is a contribution. Then I will read it again in greater depth. That okay. For example, somebody did 98% accuracy, let's say 70%, and theirs is 71. So is it really substantial? So then the debate moves on to the next level. जो इनिशियल हर्डल है वो क्रॉस हो गया. So it will take some time for you to like summarize this thing. So the only way to do it is just by reading papers. आप जितने पेपर्स पढ़ेंगे, अगर आपको पेपर में जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो नहीं भी समझ में आ रहा तो एटलीस्ट यू नो कि कैसे उन्होंने समराइज किया है पास्ट वर्क को. एंड कीप एन आई ऑन दिस पैटर्न. जो the papers you will find which are cited in reputed venues, they will have this very clear structure. Papers which go to less prestigious venues, they will not be summarizing the problem in this manner. So obviously then it doesn't get cited. For example, अब मेरे ज़हन में एक सवाल आया, मैं पेपर लिख रहा हूँ, मैं बताना चाहता था कि this problem is already known. So I can easily, for example, say कि look, reviewer is the reader is recommended to go through the related work of this paper. उन्होंने इतना अच्छा समराइज किया है उसको वो बात समझ में आ जाएगी, even if it is not a well known thing in the community. तो एक तो इस पेपर को इम्पोर्टेंस मिल रही है इसकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की वजह से, और एक इम्पोर्टेंस मिल रही है the way they summarized the related work. क्योंकि मुझे इन्होंने they have made it very simple for a reader to know what is going on. So
This is one way. This is another way of like making these tables. There is another one over here. This is a data set paper. इसमें कहा है कि हमने ज़्यादा images इकट्ठी करनी है, तो इन्होंने अब पहले images दिखाए हैं. अब ये देखिए कितने images हैं ये. This is how these maximum examples, ताकि वो डाउट खत्म हो जाए रिव्यूअर को कि अच्छा इन्होंने सिर्फ एक इमेज अच्छा था वो दिखा दिया जिस पे ये अच्छा कर रहे हैं और बाकी ये तो काफ़ी है. यू गिव मोर एंड मोर रेफरेंस. ये तो इनका अपना काम हो गया, इनका रिलेटेड वर्क है. ये देखिए इन्होंने कैसे रिलेटेड वर्क. अगेन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ प्रीवियस वर्क, और फिर उसमें इन्होंने कोई कैटेगरीज बनाई है, तो फिर फाइनली अपना बताया, उसमें तकरीबन सारे ही टेक हैं. तो okay, this is also an art that you only want the reviewer to focus on things which you are better in. Maybe there are other qualities, and there are यहाँ पे जो है ना ये बताना नहीं चाहते. This is the technique one needs to learn. Obviously, the reviewer which is an experienced reviewer, he will point it out कि अच्छा ये column क्यों नहीं add किया आपने. So this is where you can help your lab. If you join any lab and you quickly do this homework, जिसमें सिर्फ you need to spend time, you don't need to be a genius. आप अपना ये homework कर लें. You read 20-30 papers. It will take, for example, just reading an abstract takes 10 minutes, for example. So you quickly browse through like 40-60 papers in a day. Then you say, okay, it feels like out of these 60, these 15 are really related. And you spend a week reading those 15 papers and try to come up with the summary, okay, what happened actually. And then you can make a table like this and take it to your supervisor, and they can then any senior member, a senior researcher can point out any weakness or say, so this is where the supervisor needs uh, young researchers. So, and again, this is an exercise that needs dedication. You don't need to be a genius. So most of the papers will get rejected, and most of the times you will not be able to impress your audience because you are not talking about the latest. When you are talking about related work, you just talk about one paper and move on. And then the people who are senior researchers, they are really annoyed. सिर्फ एक ही पेपर था दुनिया में जिसमें आपका फोकस था, मतलब और भी तो लोगों ने काम किया है, तो व्हाट हैपेंड ओवर देयर. तो आई डाउट व्हाटएवर यू हैव डन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन. तो and just by doing this exercise you find out the knowledge gap. अच्छा क्या नहीं हुआ. Maybe that is the area that needs to be filled in. So lot of reading will help. ये हमने देख ली है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे. तो then we talked about कि जो यहाँ पे बताए हैं उनमें से जो सबसे recent है उनसे आपका comparison होगा, और जो क्लेम आपने किया हुआ होगा वो कंपैरिजन होगा. नाउ द रिपोर्ट विच यू पीपल आर राइटिंग, उसमें कोई कंपैरिजन आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आप इसी तरह का कंपैरिजन करेंगे जो रिलेटेड वर्क का कंपैरिजन हुआ हुआ है. तो फॉर यू, if you manage to do this nicely, this is enough. Once you will do your semester project, फिर जो आप रिपोर्ट लिखेंगे, फिर then you need to show what are the different approaches you tried. So then you can write with a better experimental section in addition to a very good related work.
What else? आप किसी का लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं in your own words. That you read many papers and you think that okay, this is the best approach. Then you can like try describing it in your own words. So again, it's relative. Like, once we see the reports, then we will try to rate. Okay, a lot of effort is appears to be done behind this draft, and there is any effort. So फिर इसी तरह, so the best report will set the bar. उससे फिर नीचे 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 और फिर वहाँ पे कहीं कट ऑफ होगा कि नहीं, this effort is not good enough, क्योंकि इतने लोगों ने इतनी ज़्यादा एफर्ट की है और ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही. तो फिर हमने बात की थी कि you have to be careful कि आप जो है ना, make sure you cite all the good labs. So diplomacy has to be there. आप साइट कर रहे हैं, आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, आपका कोई खर्चा तो नहीं हो रहा, तो मेक श्योर ठीक ठाक आप सबको साइट करें, मतलब किसी को रहने ना दें. हो जाता है, अगर ध्यान ना दे रहे हो क्लास में तो हो जाता है. आपका दिल है कि इंडिया हार जाए. जो दूसरों का बुरा चाहता है ना, उसके साथ फिर होता यही है. तो अब आपने एक चीज देखनी है, व्हेन यू आर रीडिंग पेपर्स जस्ट ट्राई टू सी दिस अंडरलाइंग पैटर्न. ये जो आप देखना है कि अच्छा रिलेटेड वर्क कैसा कनेक्ट किया उन्होंने, लेटेस्ट रेफरेंसेस हैं, और हाउ डू दे मैनेज टू comment on previous work, and how do they relate their work to the previous work. These are the skills which will take time. This is your first step. So when you do it the first time, it's really hard to, because we are not used to writing scientific literature. So one may say that okay, this is the limitation of this work, and this is the limitation of this work, and this is the limitation of this work. This is very डिसरिस्पेक्टफुल. एंड अगर वो बंदा पढ़ रहा है जिसका काम आपने इस तरह लिखा हुआ है, तो उसने कुछ अच्छा भी तो किया था ना. यू हैव टू अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ द पेपर फर्स्ट, एंड देन से ओके, देन somebody, आप अगले की बात कर दें कि इन्होंने इस काम को इम्प्रूव किया है. तो these are the skills which you need to develop. हमारे पास हो गया सारा एक्सपेरिमेंट में देयर हैज टू बी अ कंपैरिजन. यहाँ के ग्राफ्स होने चाहिए ज्यादा सारे, ताकि दिल भर जाए रिव्यूअर का. So, as I have already told you that once you start working on your thesis, uh, you know what is the state of the art, and you start working with it, and then you compare your work with that work, and you will say, okay, I now have improved it. By the time you are about to complete your thesis, there is a new work, and then your supervisor suggests कि अच्छा ये comparison होना चाहिए, and then you are like नहीं बस अब खत्म हो गया, अब मैंने कर दिया बेहतर पुराने वाला, बस अब मैं पब्लिश करूंगा. तो आप लड़ सकते हैं सुपरवाइजर से, इसका फायदा नहीं होगा. Now things are slightly simpler these days. People provide their code, so you just need to be patient for one more week and try to go through that cycle. Uh, and again, this is also an art that if the code is not available, you can send an email to the author that I am interested in your research. It will be great if you can provide me some beta version of your. तो मे बी सारा कोड वो ना दे, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको दे दे जिससे आप कुछ कंपैरिजन करें. तो आप कहेंगे दी पब्लिकली अवेलेबल कोड जो था उससे मैंने कंपेयर किया, और ये मे बी दी क्रिटिसिज्म फ्रॉम द रिव्यूअर गेट्स डाइल्यूटेड. आपने कुछ कर दिया, आपने 10% काम कर दिया
90 की बजाय, तो भी the reviewer is satisfied कि you went an extra yard. So this is the trick, that you need to somehow maybe implement part of it and try to compare it, or just mention it, okay, this is my implementation of this work. Then it is expected कि आपने उतना अच्छा तो नहीं implement किया होगा ना उसको. Bहरहाल the effort has to be visible कि you tried making an effort. So these are $1 million skills. Intellectual property, innovation, this is the path of innovation. कि नया साबित करना अपने आप को कि हम वाकई नए हैं. So this is the skill which is you hardly find in maybe in 100 graduate students, only one gets to this, who learns these skills by practicing. Even in faculty members, most people don't go through this cycle. People who are not used to publishing in good venues, they never go through this cycle. If you really want to make your, हमने देखा था कि big labs and high tech industries, they are spotting people who have actually published in good venues. So this is a proof that they know all these skills. Only then they can get to that point. So one might be very good in solving exam, which is good, but then you need to like grow and learn another skill if you really want to become a researcher. Uh, have seen that you really need to explain your own section. अगर आपने कोई equations use की हैं, तो you can make diagrams and explain each variable what is going on. ये भी हमने देख लिया कि 5 out of 6 are related to past work. आपने बताया, आपने कन्विंस किया हम नए हैं, आपने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में बताया, कंपेयर करके बताया, तो मोस्ट ऑफ द एफर्ट इज गोइंग इन. आपने अपना तो काम जो कर लिया, अब जो एक्चुअल हार्ड वर्क है, नाउ इट स्टार्ट्स and it is your own responsibility. So what you will do, you will write a paper and you will submit, and then sometimes the paper gets rejected, and if it gets rejected from a good venue, it is fine. Getting rejected from a good venue is valuable than getting accepted in a from a bad venue. So when the reviewer will reject, वो आपको actual state of the art point out कर देगा कि अगर मुझे नहीं भी पता था, if I am new to the research world, they will point it out कि अच्छा ये चीजें आपने नहीं की, तो just now you know how the community thinks, तो फिर वो आपको help हो जाएगी for free. ठीक है, तो these prestigious venues, they do not charge anything. पैसे नहीं लेते पेपर पब्लिश करने, सबमिट करने के लिए भी नहीं लेते. But if you have done a really bad job in writing your first draft, the paper will get rejected immediately and you will not get this valuable feedback अगर आपने effort ना की हो. अगर आपने ये सारी जो known weaknesses हैं, जो आपकी सकत में थी, जो आप ठीक कर सकते थे कि तस्वीरें ठीक हैं, कोई मैंने टाइपो तो नहीं किया हुआ, I tried my best to find out the related work, जब आप सारे bases cover करेंगे, तो you will get valuable advice. अगर पेपर रिजेक्ट होता है, तो somebody else will solve your help you in that weak section अगर आपको नहीं पता. हाँ, ये देखिए ना, ये हमने देखा था कि रिलेटेड वर्क में if some paper is very close to you, just mention it. आप मेंशन कर दें तो रिव्यूअर के पास कुछ नहीं है कहने को. आपने छुपाने की कोशिश की और आपको लगा कि उसको क्या पता होगा, तो उसको तो पता ही होगा, फिर आपको भी पता लगेगा. तो
This is a trick, like when you are really talking about latest papers, like some paper that got published last month, the reviewer might be outdated, and then the reviewer will be slightly nervous कि अच्छा ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो maybe they are more up to date than I am. So फिर ये actually ये these are the things which early researchers might be pressurized to do. Okay, लिखा हुआ है. आप you try to oversell कि जो आपकी contribution है, you really try to say we have done excellent work in solving this problem, और वो जो है ना the results don't support it, and then you don't mention your failure cases. If somebody is mentioning their own failure cases, it's, I mean, then it shows that the person is really confident कि मेरे भी failure cases हैं, लेकिन ये बाकियों के भी यही होंगे. This is the limit of this current state of the art. Very few papers talk about failure cases. And obviously, if you are like disrespectful to the related work, so you have to be careful. These are serious issues, and if you like claim something and your paper gets accepted, and then somebody finds out that your approach doesn't do what you claim, तो एक तो ये हो सकता है कि your paper doesn't get cited, which is okay, fine. Not every novel gets world famous. But if you deliberately, I mean, you were doing an experiment and something, there was a bug in the code and you got some results. Most of the times it happens that आपका कहीं पाथ आप गलत बता देते हैं, तो टेस्ट डेटा की जगह ट्रेनिंग डेटा का ही वो पाथ होता है, तो वो नंबर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि this can be an honest mistake. लेकिन अगर किसी को ये पता चलेगा आप हर दफा ये कर रहे हैं कि आप जो है ना वो फेक नंबर्स प्लग करते हैं, और जब आपकी अप्रोच यूज की जाती है तो द रिजल्ट्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल, then you lose your respect. I mean, I will not read your paper, I will not use your code. You might be able to trick the reviewer into accepting your paper, but I have no respect for that reason. उसका ऑपोजिट साइड देखें. मैंने पेपर में एक बात की, आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसमें वही रिजल्ट आया जो मैंने कहा था. So now you have like full faith on the research coming out of this lab. ये जो कहते हैं वो होता है. So now you have created fans for yourself. ये जब ये कहेंगे तो ऐसा होगा. So this is the place where one wants to be. ये देखें ना, ये दूसरी एग्जांपल बता रहे हैं कि इन्होंने भी बेस्ट पेपर अवार्ड देना था. अब ये बेस्ट पेपर अवार्ड का मतलब ये है कि द बेस्ट, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन रिसर्चर, ये लेटेस्ट प्राइज होगा आज की दुनिया में. तो इन्होंने उसको डिसाइड कैसे किया था, मे बी देयर वर कंप्यूटिंग पेपर्स, बट उससे पहले कोई एक ऑथर होगा हु इज नोन टू जनरेट रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च. तो उन्होंने कहा कि हमें कोई शक नहीं है, इसने ठीक ही किया. This is an example where I was talking about a very old reference. This is where you need a senior member in the team. We see students, they come up with an idea and then they are slightly arrogant, and then they say कि इनको क्या पता होगा, हमने जो है ना फलाना कोर्स अटेंड कर लिया है कोर्सेरा पे, और ये हमने पेपर पढ़ लिए 2-3, तो इनको क्या पता होगा. तो इनको ये पता होगा जो आपको नहीं पता. You always need a senior member in the team who can really polish your work. Students who are not interested in meeting with their supervisors and not interested, they just go अंडर द रिडार. अब चले गए तो कुछ हम जब काम जब खत्म हो गया ना, फिर हम बताएंगे मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. आपके होंगे रिजल्ट्स अच्छे, बट द कम्युनिटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर अच्छे रिजल्ट्स. यू नीड टू डेवलप गुड हैबिट्स.
के लिए लिफ्ट आ जाती है। हाँ, पकड़े जाएंगे तो so so now we have this summary. Good result upfront, introduction to motivate why what you have done is important, some very nice figures, summary, don't hide your contribution behind long paragraphs. If you will do it, I will see, okay, it is hard to point. What is the novelty of the work? आप लिखते जाएं, जब मैं थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते तो मैं कह दूंगा, it's not clear what is the novelty of this work. So it's your word against the reviewer's word, and if the reviewer says that, then it is the end of the story. And then this is the section where you really need to work hard and you really need to develop a habit of reading a lot and trying to connect the story to what is happening in this problem. And this doesn't, you don't need to be a genius, you just need to be punctual. We keep on reading papers. And then this is the section which you are the most comfortable with. खुद किया था. You make nice diagrams and you make explain the mathematics, and finally this is the section which seals the deal. Nice graphs, comparisons, and also the failure cases. And finally it comes the conclusion. यहाँ पे पहली लाइन तो मुझे पता है conclusion में क्या लिखनी होती है, बाकी फिर आपकी choice है. अब some people summarize what they have done. Some people talk about what are the future opportunities which might be possible. तो यहाँ पे आप टेम्प्ट कर रहे होते हैं रिव्यूअर को, अगर 50-50 है ना, आप उसको बता रहे होते हैं कि अच्छा ये नया हो सकता है, ये नया हो सकता है, तो अगर तो वो जूनियर रिसर्चर है ना तो वो टेम्प्ट हो जाएगा, नहीं इसको पब्लिश होना चाहिए क्योंकि फिर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना पब्लिश कर दूँ. बट द फर्स्ट लाइन इज इन दिस वर्क वी आर द फर्स्ट वंस टू डू ब्ला ब्ला ब्ला. ये पहली लाइन है. जब वो पढ़ा कर फाइनल पहुंच जाए ना इस पैराग्राफ तक, तो पहली लाइन में आपने ये बताना है कि क्या आपने नया किया था. मतलब यही लाइन आप ना ये जो यहाँ से उठा के ना यहाँ लिखो ताकि उसको याद आए कि अच्छा नया क्या था, क्योंकि वो गुम होगा कहीं अपने उसके शायद कोई बेस लाइन हो, पता नहीं कौन कौन से वो डेटा सेट्स हैं जिस पे टेस्ट होना है, तो ही समवेयर एल्स थिंकिंग अबाउट थिंग्स. यू नीड टू ब्रिंग द रिव्यूअर बैक. दिस इज व्हाट वी हैव डन न्यू. नहीं तो जो पॉइंट उसने एतराज, असल में एक जो पेपर होता है ना वो एक बंदे को नहीं जाता, 4 बंदों को जाता है, और चारों को नहीं पता होता कि किसको कौन, किसी को नहीं पता होता कि ये पेपर और किसको गया है. तो देन यू गो फॉर मेजोरिटी वोटिंग. अगर फॉर एग्जांपल 4 बंदे हैं और 3 तो बहुत जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं और एक बंदा जो है वो इस तरह का है, तो then you can, there is a phase called rebuttal phase. In some venues they give you a chance कि आप रिबर्ट कर लेंगे, नहीं ये जो आप बात कह रहे हैं ये जो है ना दुरुस्त नहीं है और ये वजह है उसकी. आपको ये एक नई एक्सपेरिमेंट ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आप करते हैं और आप कहते हैं ये जो आप कह रहे हैं ना उसका रिजल्ट ये है. Most of the times in prestigious venues, once you get rejected, there is an actual issue. So, and things are moving so fast that even if somebody rejects your paper, who is to say कि किसी और ने कहीं और वही एक्सपेरिमेंट नहीं कर देना, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि अब उसने ये सारा चीजें रिपीट करनी है ना. फॉर एग्जाम्पल यू कलेक्टेड अ वेरी बिग डेटा सेट, ठीक है, तो आपको जो है ना 3 महीने लगे डेटा सेट इकट्ठे करने में, तो अब वो कहाँ से इकट्ठा करे डेटा सेट. आपने तो पेपर दिया ना, डेटा तो नहीं दिया उसको. वो तो आप तब रिलीज करेंगे व्हेन इट गेट्स एक्सेप्टेड, तो वो 3 महीने लगाएगा वो डेटा तो इकट्ठा करने में, और उतने में आप कहीं और भेज देंगे. इफ यू थिंक यू हैव रियल नॉवेलिटी, तो आपको एक जगह थोड़ी होती है भेजने की, आप कहीं और ट्राई करेंगे अनदर प्रेस्टिजियस वेन्यू, तो वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसको क्या फायदा होगा ये सारे फ्रॉड करने का. एंड देन द पीपल these, in order to become a reviewer of a prestigious venue, is you have to prove over the years कि you are a good reviewer.
आप पता नहीं कितने पेपर्स आप रिव्यू करते हैं, पहले पब्लिश करते हैं उन वेन्यूज में. यू फर्स्ट प्रूव दैट यू आर अ क्वालिटी रिसर्चर, तब आपको सिलेक्ट किया जाता है एज अ रिव्यूअर. तो मैं तो मतलब जो रिव्यूअर है वो तो पहले ही पब्लिश कर रहा है, उसको क्या परेशानी पड़ी हुई है कि आपका वो आइडिया वो जिसमें वैसे ही कोई खामी है उसके पीछे वो भागना शुरू कर दे. तो इन लो क्वालिटी वेन्यूज इट विल हैपन कि काम भी कुछ ऐसा नहीं है और पढ़ने वाला रिव्यू करने वाला भी कुछ ऐसा नहीं है, तो बस उसके दिल में चोर है कि अच्छा ये मैं, तो उसको जरूरत नहीं है आपका वो एक्सेप्ट कर ले, वही करके कहीं और जमा करा दे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा. तो लो क्वालिटी वेन्यू में तो दोनों चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी. What are these low quality venues? That the novelty is very little, but they accept it because of reasons or other reasons. तो उसको जरूरत नहीं है आपका रिजेक्ट करके अपना एक्सेप्ट करने की. अगर तो लो क्वालिटी वेन्यू है ना, तो आपने या मैंने उसमें पहले कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं की हुई नॉवेलिटी, तो मैंने भी किसी और का ही इस्तेमाल किया है काम. तो मुझे कुछ खास परेशानी नहीं होगी कि वो मेरा, तो पीपल नो व्हेन यू आर सबमिटिंग योर वर्क, यू नो कि अच्छा ये स्टैंडर्ड का काम है, ये स्टैंडर्ड का काम है, ये स्टैंडर्ड का काम है, और ये किसी स्टैंडर्ड का काम नहीं है अभी तक. यू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट एंड इट फेल्स, इट्स ओके, दैट इज फाइन. So you try like 10 experiments and one of those works, it is okay. Those 9 experiments will help you some other in some other project some other day. It's a long term process. कोई एक पेपर पे तो जिंदगी नहीं ना वो आपकी इनसार करी कि बस यही पेपर है जिसने, you try one, it doesn't get famous or it's not accepted, and you try another one and then you keep on improving. क्या चीज? तो यहीं पे आप एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आ जाएगी ना वीकनेस, जब आप एक्सपेरिमेंट में कोई नंबर दिखाएंगे विच इज लेस, तो देन यू विल हैव टू कमेंट ऑन इट. अभी ये जो आप पेपर पढ़ रहे हैं उधर पढ़े ना एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में, कैसे वो अक्सर तो वो बताएंगे नहीं वीकनेस, और जो बहुत अच्छे बताएंगे फिर वो डिस्कस करेंगे कि इन एरियाज में वी आर गुड एंड इन एरियाज में प्रीवियस वर्क इज गुड. So you have to like develop these skills. अच्छा, very emotional, and most of the times when somebody comes to me as, which is okay, if you have done the hard work you would want to be the first author, that is fine. But when you are working in big groups, in big labs, then sometimes, for example, you need a baseline which somebody else in the lab is already working on for like last 6 months. You don't like that person, but your supervisor asks that person to provide the comparison for your work. ठीक है, तो टू सेव टाइम, क्योंकि to the outside world you are the same lab, and if you delay it further maybe somebody else publishes it. So then as a young researcher people are really annoyed with their supervisors that I worked on this paper for like 2 years and this person comes along and gives me one number and they are also part of the author list. No, they are not author. मैं होने नहीं दूंगा ये. This is a real issue. And then in very big labs you will see, which I have faced, is that the very senior researcher is doing nothing in the research. Matlab, there is this professor and then there are some postdocs and then there are PhD students and then there is this MS student और काम MS student ने किया, and some PhD student has supervised this MS student. अब इस MS student की कभी मुलाकात भी नहीं हुई उस बंदे से जो कि head of the lab. तो नाउ पेपर लिखते हुए जो है ना, पहले MS स्टूडेंट देन PhD स्टूडेंट एंड देन दीज बिग नेम्स कम, तो आप कहेंगे इसने किया क्या है, इसमें ये जो रिसर्चर बना है. तो समटाइम्स इट इज अनएथिकल एंड
वेरी गुड रिसर्चर्स दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी रिसर्च जो उन्होंने खुद ना की हो, क्योंकि उस पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। दे आर यूजिंग देयर नेम। तो वेरी गुड रिसर्चर दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि अगर मैंने आइडिया नहीं दिया और मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, फिर मैं आपकी रिसर्च को वैल्यू ही नहीं करता। एक तो ये है पीपल हु आर वेरी गुड। देयर इज दिस अदर थिंग इज दैट दिस रिसर्च इज टेकिंग प्लेस, ये फॉर दिस इज फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, ये जिसने 5 साल काम किया हो ना अपनी जिंदगी का, और उसका एक पेपर 5 साल बाद पब्लिश हो रहा हो, तो that state of mind is really emotional and you are not ready to accept any advice. तो उसमें ये होता है कि you have to one has to realize like somebody was paying you for 5 years, somebody won the grant somewhere, 5 साल पहले उसने जो मेहनत की होगी ग्रांट विन करने के लिए, और उसने the person who has created the lab उसने एक environment create किया जिसमें you are solving the problem. तो दिस इज वन एडवाइस, बट इन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है ये दिस पर्सन। ये इन्होंने कह दिया है कि परेशान हुए बगैर ना आप एक और ऑथर ऐड कर दें। आपने सोचना ही नहीं है कभी इस ऑथर वाले मसले पे। ये इन्होंने कहा है कि इफ adding that person has helped you even a small bit and this paper gets accepted and gets famous, so everybody will know that you are the author of the famous paper. You don't care कि और कौन सा है, मतलब कोई वर्ल्ड कप आप जीत जाएं तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो जो 13 मैन था जिसने कभी खेला ही नहीं मैच उसको भी मेडल मिल रहा है। यू डोंट केयर। तो दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच कि यू डोंट गेट इमोशनली ब्लॉक्ड कि अच्छा नहीं मैं पेपर ही नहीं लिखूंगा। दिस इज फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट फॉर यू। आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे ही नहीं। एमएस इज नॉट मेंट फॉर दिस। दिस इज like when you have invested 4 years of life of your life। तो इन्होंने बहुत ये सिंपल बता दिया है कि and then again this question, how many authors should be there? There can be as many authors as you want if they are actually improving the work, but people abuse this thing somewhere over here that मैंने अपने पूरे खानदान का नाम लिख दिया है। तो people know about these things। You have to be in doing quality work, you have to be careful about these things. There has to be a genuine reason why somebody is an author, and if there is a reason then it is okay, don't get too much worried। ये हमने ना, this is the most, जो once you will, hopefully some of you will go and join good labs around the world, and once you spend 4 years working in a lab, this is the असल झगड़ा यहाँ पे होता है। अभी पेपर एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट अच्छे हैं नहीं हुए, वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब आप भेजेंगे तो कोई रिव्यू भेजेगा आपको। आपके जहन में तो एक्सेप्ट हो गया है ना कि मैंने काम कर दिया। अब असल है ना यहाँ पे आप जो है ना रोज लड़ाई, लैब में आए ना तो रोज लड़ाई, सुपरवाइजर से लड़ाई कि मैंने इस बंदे का नाम नहीं होना चाहिए, ये पहला, ये दूसरा नहीं हो सकता, ये तीसरा नहीं हो सकता। तो इन्होंने कह दिया कि इन बातों का फायदा नहीं होता। इफ द पेपर गेट्स फेमस, व्हाई डू यू केयर कि कोई और भी था? अक्सर तो पेपर से रिजेक्ट ही होना होता है, मतलब 4 में से एक ने जाना होता है ना अच्छी जगह पे। तो यू डोंट नीड टू लाइक spoil your personal relationships in the lab कि आपने हर बंदे से लड़ाई की। तो नाउ कम्स द टाइटल। इसके बाद जो है ना टाइटल, अच्छा अब ये देखें ना, ये एक बुक आई और ये कोई लेट से मैंने कोई जर्नल है उसकी तस्वीर खींच ली, और यहाँ पे ना आप पढ़ नहीं पा रहे लेकिन काफी सारे पेपर पब्लिश हुए हैं इस महीने, फर्ज कर। ये देखें ना, कॉन्फ्रेंस भी ऐसे ही होता है कि कॉन्फ्रेंस में देर आर लाइक 100 पेपर्स एक्सेप्टेड, 400 सबमिट हुए थे, 100 एक्सेप्ट हो। ठीक है, तो अब आई एम ब्राउजिंग, अच्छा मैंने किस पेपर को पढ़ना है, या अगर मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ तो किसकी मैंने टॉक सुननी है। तो मेरे पास सब तो मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। तो
some of the people are famous, उनका तो शायद मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन then I have extra time, तो what should I do? उसमें जो है ना, the most important चीज जो बन जाती है वो आपका टाइटल बन जाता है। ये you need to come up with a very nice title for your paper, and this is not easy. If you try to be too fancy, then you lose the message of the paper, and if you tend to be too technical, then it becomes hard to remember the name of the paper. अब ये देखें ना, यहाँ पे मैंने भी 3 पेपर खोले हैं, इन सब का ना मुझे नाम याद था, मुझे पूरा टाइटल तो नहीं याद था, मुझे एक लफ्ज याद था, इसका ये याद था। अब ये नाम नहीं याद था मुझे, ना इन ऑथर्स का किसी का नाम मुझे याद था। फिर ये जो पेपर था इसमें मुझे ये बिल्कुल भी नहीं याद था ये क्या है, मुझे बस ये पता था कि इसका ये नाम है। इसी तरह वो जो तीसरे वाला है उसका मुझे ये याद था, ये नहीं याद। तो वो जो पेपर है, वो जो 1917 वाला है, उसका मुझे याद नहीं है अब क्या टाइटल है, दोबारा जाके देख लेते हैं। हाँ, so maybe this is not a very nice name to remember. Maybe they might have made some effort to use a good। यहाँ पे ये बात करते हैं ना कि इसका क्या नाम था और क्या होना चाहिए था। ये देखे ना, अब ये पेपर इन्होंने कर लिया पब्लिश, तो ये कुछ इन्होंने टर्म्स यूज कर ली, ये टेक्निकल था, और ये कह रहे हैं कि अब अगर इन्हें दोबारा मौका मिले उसका टाइटल लिखने का, तो मे बी दिस इज मच easier title to catch the attention of the people. So you need to like, so this is again a skill। और आप ये देखेंगे कि ये पेपर है, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। ये फर्स्ट पार्ट उनका वो है जो मैचिंग है, और ये टेक्निकल चीज बाद में आती है। इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी, तो दे क्या टुक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टू द फ्यूचर, तो उसको उन्होंने पैच टू द फ्यूचर कह दिया। अब मुझे याद रहेगा ये नाम। तो दिस इज ऑल्सो अ स्किल यू डिस्कस विद कॉलीग्स कि अच्छा इसको मैं कैसे जो है ना एक सेंटेंस में समराइज कर सकता हूँ। ये मैंने आपको मशीन लर्निंग में एक पेपर दिखाया था, तो ये देखें हाउ डू बिग लैब्स दे वर्क। इन्होंने जब काम कर लिया ना, तो दे न्यू कि दिस इज अ सेमिनल वर्क, इट्स अ वेरी गुड नॉवल वर्क। तो क्या नाम होना चाहिए, तो फिर इन्होंने लैब में कॉन्टेस्ट करवाया कि इस पेपर का क्या नाम होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें बताया कि आप जो है ना ये रख लें, ये रख लें। उसके बाद फिर दे फाइनली केम टू दिस। I don't know how they came to this name, but they made an effort to like simplify their contribution. So again, you see, you don't need to sound very technical. You need to like make things simple. जितना आप मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उतना जो है ना you are facing a disadvantage. Again, here you need a senior person to tell, to connect you with the। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है ये नाम मुझे क्यों लगता है इन्होंने रखा था, ये इस वजह से रखा था क्योंकि मैटलैब वाज वेरी कॉमन इन दोज डेज, और मैटलैब में जो भी फंक्शंस लिखे जा रहे होते हैं ना, वो अक्सर इसमें होते थे दिस टू दिस, वो उधर भी टू ही होता है मेरा ख्याल है। हाँ, इमेज के लिए भी आई एम होता है, तो लोगों के जहन में था कि उस टाइम पे मैटलैब बहुत फेमस था, तो इन्होंने कहा कि ये सबको समझ में आ जाएगी, जो भी इमेजेस के साथ काम करते हैं ना, तो दे यूज दैट ट्रिक। वो दूसरी थी उसमें मूवी वाली यूज कर ली, इधर ये यूज कर ली ट्रिक। These are the things which really help you sell or market your work. And these are the interesting parts. Sometimes things are very technical. You can't come up with these things. उधर फिर आपको वही लिखना पड़ता है जो है। It's okay. तो ये this is a very famous example। ये there is ये भी नाम के बारे में है। So this is a paper from 1963। So I saw this discussion in the video lecture
ये जो MIT का कोर्स फेयर है ना, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है। आई वाज वाचिंग दिस कोर्स सम टाइम बैक, और ये उसकी जो है ना ट्रांसक्रिप्ट है, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट सम पेपर। अब पढ़े जरा। तो एक पेपर आया कि कंप्यूटर्स कांट प्ले चेस। जब पहली दफा किसी ने कोशिश की होगी एल्गोरिदम लिखने की चेस के, तो ये 63 की बात है, नॉट वेरी ओल्ड, 50 years ago this AI thing started. This person said कि नहीं, computers have fundamental limitation and computers are not ready to play chess. मेमोरी शायद कम हो या जो भी हो। फिर इन्होंने शायद कहीं प्रूव किया कि नहीं, कंप्यूटर्स कैन प्ले चेस, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कंप्यूटर्स कैन प्ले चेस, इन्होंने उस बंदे का नाम लिख दिया कि जिसने पहला पेपर लिखा था, लाइक चौधरी can't play chess either. So just these titles they give you the sense कि जो बंदा लिख रहा है उसको पता है वो क्या बात कर रहा है. So again, this is one very interesting area where you can really make your paper stand out in that long list. आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो sometimes you have a poster, आप पोस्टर लगा के खड़े हुए हैं, and people just pass by you and they just keep on reading title. तो अगर आपने 4 लाइनों का टाइटल ही लिखा हुआ है तो I am not interested, आपने क्या किया, unless you are an Einstein, फिर तो मैं जरूर रुकूंगा. So these are the skills which really help your work. uh, बबल सॉर्ट करते 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 जो है ना, आपने यू पेड अटेंशन टू दीज थिंग्स एंड स्लाइटली स्लाइटली ना आपका पेपर बैड से गुड और गुड से जो है ना वो. तो चलें, लेट्स टेक अ 10 minute ब्रेक.